but let me just say this is going to be a very brief introduction and a very basic introduction. And as Dr. Kausha said, please feel free to ask questions, but we will definitely be doing separate sessions for different countries around the world. But at the moment today, we are lucky to have this forum of doctors from around the world. So I'll be sticking to English because that's what I'm comfortable with. Okay. So as we saw just now, there are a few people who have not heard the word Enagic. So let me tell you that Enagic is the company that makes this medical device, which makes Kangen water. So this Kangen water system is a gift from us from Japanese craftsmen. And we all know that Japanese have excellent quality and service in their culture, in their industries, in their manufacturing processes. Now, if I talk about the word Kangen, Kangen actually means back to origin. So what are we trying to achieve here? I think you will all agree that our lifestyles are changing. And when we were cavemen or cavewomen, we actually used to live by the rivers and used to drink water straight from the river, right? And that was the original way that humans used to consume water. We have all moved from villages to towns and towns to cities, and our lifestyles have changed. So along with this change in lifestyle, so has the way we consume water. So what this company has tried to do is try to create a water with the original properties. So what are those properties? Let's have a quick look. Now, I'm sure you all must have heard of the word antioxidation, but along with antioxidation, Kangen water, which is actually also called miracle water, has a property of microclustering and alkalization. Let me just clarify at this point that alkalization is different from alkaline water. There is a lot of buzz at the moment in the media, the press, the internet, and in general conversation about alkaline water. Water can be made alkaline by adding chemicals and other substances to it. This is not the same as alkaline water. This is alkalized water, or in medical terms, it is also called reduced water, which we'll hear from the doctors later on. So that's just one difference I want everyone to keep in mind today. Okay. So these are the properties of the water. This is a medical device, and this device produces different type of waters based on their pH. The miracle water that I talked about was the water which ranges from a pH from 8.5 to 9.5. But along with that, this device also creates lots of other utility waters, which are extremely helpful in our day-to-day lives and can help us live healthy and important for maintaining our nutrition and things like that. But I won't go into those details right now. So what makes Enagic different? Well, we all know that anything that is in the health industry or anything to do with our bodies needs to be tested. And let me tell you that this machine is the only water system in the world that has an ISO 13485 certification. I'm sure we've all heard of ISO standards. As a medical engineer, I can vouch for you that it's very, very difficult for any company to get this certification. Not only ISO, but this device, this medical device has also been certified by the Public Health Authority of Japan and is the only device approved for use in Japanese hospital. And the process of getting this approval took 20 years. So we're not only talking about a device that is approved by international bodies, but it also is time tested. This is not a new technology. This was first introduced in Japanese hospitals and used there for 20 years. And after that, it has been expanded internationally. And at the moment, it's almost been over four decades, actually 5. It's 47 years to be exact. So almost 47 years, this system is being used internationally. Currently, they have offices in 23 countries and 40 locations and are providing everyone with healthy water. How can they achieve this? So the main USP compared to other water ionizers is the fact that they have their own equipment manufacturing facility, OEM facility, and that is a very unique concept for water ionizers. And because of all of this, it is being recommended
by leading doctors globally. How many? More than 6,500 doctors and growing are endorsing this product and this water on a daily basis. I think we'll all agree that when a doctor endorses something, they do it on the base of science, on the base of their experience, and also on what they have understood from the research and from their experience. Let me tell you this, that in America, if you are endorsing something, then you always run the risk of getting questioned. There are many VVIP international leading doctors in America who have given written endorsements on their social media handles and even in books, which makes this a very unique product. And I will end it there and hand it over back to Dr. Kesha, and we can hear from the doctors. I hope this helps. Kosha. Hello. Dr. Kosha, I hope that was an okay introduction. Yes, yes. Sorry, my internet got frozen. No, thank you so much, Mr. Love, for giving such a brief introduction. And now, let not waste the time. And I really would like to invite Dr. Viral Moore from Surat. सर क्या आप बता सकते हैं हमें कि ये कैंगन वाटर हमारे बॉडी के लिए क्या है? आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? और हमारे डॉक्टर्स जो हमारे साथ इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी आज जुड़े हुए हैं, वो क्या कहते हैं ये कैंगन वाटर के बारे में? प्लीज डॉक्टर वीरल मोर. Yes, thank you very much, Dr. Kausha, and thank you also from the Mr. Lau. Such a nice presentation about the brief introduction of the Kangen water. And what is the Kangen water? In the my language, I say only the one word. Kangen water is just experience, like the swimming, like the cycling, or the whatever. Can you believe? जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप इसके बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते. माई सेल्फ डॉक्टर विरल मोर फ्रॉम सूरत, गुजरात, इंडिया, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन. एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सब जगह टाइम अलग अलग है, तो इसलिए सबको मैं तीनों फॉर्मेट में वेलकम करना चाहता हूँ. आज का हमारा सेशन है व्हाट्स ए डॉक्टर अबाउट द कैंगन वाटर. जब भी कैंगन वाटर का किसी को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना जाता है तो वो किसी को बोलते हैं तो सबसे पहले क्या डर आता है कि डॉक्टर को नहीं बताएंगे, किसी को भी बताएंगे, मिनिस्टर को बताएंगे, सबको बताएंगे, लेकिन आई कांट टेल टू डॉक्टर्स. व्हाई? बिकॉज एक डर पैदा होता है कि जहन में कि डॉक्टर्स को अगर बता दिया तो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे. मुझे जैसे कि हमारे कल्पेश भाई ऑलवेज टेल के किडनी नहीं तो निकाल लेंगे, कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स तो किडनी निकाल लेंगे अगर डॉक्टर्स को बोला तो ये सारी जो बातें हम जानते हैं, रूटीन हमारी प्रैक्टिस में भी आती है, रूटीन हमें सुनने में भी आती है, वो सारे जो मिथ है, जो फैक्ट्स है, आज यहाँ पर रिलीव होने वाले हैं. आपको ऐसा लगने वाला है कि भी जैसे कि डॉक्टर्स को कैंगन बताना में इट्स इजी, इट्स वेरी इजी, लाइक अ साइकिलिंग और लाइक अ स्विमिंग. तो जानना चाहते हैं आप सब मेरे साथ, अगर आप भी एक डॉक्टर के साथ जुड़ना चाहते हैं भाई कैंगन में, कि भाई चलो क्या है, व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द कैंगन, तो प्लीज टेल मी, से यस in the chat box. Please come on fast. Yes, I got so many yeses from the, thank you very much for the giving the great response. Now we are going to start our main session. Our session is what doctors say about the Kangen water. So there are so many different types of doctor in the around the world. So I want to go introduce some basic doctor, not basic but world's मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्टर्स. इफ वी से, अगर मैं चाहूँ कि वर्ल्ड के टॉप 150 डॉक्टर्स लूं, उनमें से कुछ अगर आते तो वो लोग कैंगन के बारे में पहले तो क्या कहते हैं, तो हम वो जानेंगे. मैं बेसिक आपको यहाँ पे से इंफॉर्मेशन दूंगा. उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला कि दिस इज द एक्सपीरियंस, कैंगन वाटर इज नथिंग, इट्स एक्सपीरियंस. उसको महसूस करने का है, पानी पीने के बाद ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि दवाई तो हम पी नहीं सकते. अगर पेशेंट को, मुझे किसी को दवाई देनी है तो आई कांट टेक द मेडिसिन बिफोर इट्स गिविंग.
कि किसी को पेशेंट को देने से पहले मैं दवाई नहीं पी सकता, बट आई कैन ड्रिंक कैंगन वाटर सो आई कैन एक्सपीरियंस इट। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर से मैं जिनसे आपको मिलवाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा the most famous doctor of the world, Dr. Hiromi Shinya. He is the chief of the surgical endoscopy unit, Beth Israel Medical Center, and clinical professor of surgery, Albert Einstein College of Medicine. So such a nice doctor. And what he say about the Kangen water? This is the book, The Enzyme Factor, and so many other book also written by him. And that is the headline. This is the back page. And see, you can see if I cursor remove, drinking Kangen water can help cure obesity. यहाँ पे बुक के फ्रंट पेज पे बैक साइड पे लिख के दिया है उन्होंने, बोलते नहीं, लिख के दिया, ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। नॉट ओनली दैट, आगे भी वो क्या कहते हैं उनकी बुक्स में बहुत सारे, एक लाइन अगर आपने ये पढ़ ली, इफ यू रीड दिस लाइन केयरफुली, Kangen water is alkaline rich water and it's considered the very best drinking water because of its incomparable powers of hydration, detoxification and antioxidation. There are so many books written by them. There are so many chapters like this. This is the Kangen water chapters and so many other things described by this doctor. So just imagine which type of this doctor and what he say. I also met you some other doctors around the world. What's they say about the Kangen water? Here, this is some small video clip. We are going with it. Dr. Hiromi Shinya, MD, leading gastroenterologist and surgeon. I told already about them. Dr. Filter, MD, vascular surgeon. He says, I endorse Kangen water trademark as a physician, surgeon, and as a human being, 100%. Dr. William Hardware, Dr. Otto Warburg, chemistry Nobel Prize winner. What he say? Cancerous tissue are acidic, whereas the healthy tissue are alkaline. Dr. Corey Allen, डॉक्टर MD. वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, वीडियो नॉट प्ले। विरल भाई एक्सक्यूज मी, वीडियो नहीं दिख रहा है। या सॉरी, वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं, सिर्फ आपकी स्क्रीन आ रही थी। जस्ट अ सेकंड। Okay? Yes. Okay. Thank you for responding. This is Dr. Oswalder, MD, and also the vascular surgeon. Dr. William Howard, surgeon and developer of the headache. Dr. Otto Warburg, cancer tissue are acidic, whereas the healthy tissue are alkaline. It's also get the Nobel Prize. Dr. Corey Allen, MD, nutrition, strong source of antioxidant and improve vitamin by Dr. Dave Carpenter, Kangen water sulfur chart nutrition for the better than anything. Yes, absolutely. Dr. Stephen Paper Sprite. Acidic waste products are direct cause of premature aging at the onset of disease. Fairy users and यस, ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है। अगर मैं वीडियो प्ले करूं तो शायद इट मे बी गोइंग टू मॉर्निंग, बट दिस इज अवर टॉक शो। मतलब ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैंने जैसे बोला कि दिस इज द प्रोग्रामिंग ऑफ द एक्सपीरियंस। तो आज हम ऐसे डॉक्टर से आपकी बात करवाएंगे जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसे ही वन ऑफ द मोस्ट फेमस डॉक्टर फ्रॉम दी
Is it from the Surat? No. Is it from the Gujarat? No. Is it from the India? No. I want to invite the seat from the London, UK, Dr. Kalyani. Please welcome Dr. Kalyani. She is the neuro physician in the UK. So I would suggest to please invite him. Sorry. Yes, Dr. Kalyani. Can you hear me? Please unmute her. Yeah. Namaskar to everybody. Thank you, Dr. Moore. I hope everybody can hear me. Yes, thank you. Welcome. Welcome in Jal Kranti Parivar from Right. Surat, Gujarat and India. Okay. First of all, thank you very much for giving your precious time to us. And your time is Okay. money, we know very well. So Right. we don't waste time. मैं थोड़ी मिक्स लैंग्वेज यूज करूंगा इंग्लिश हम आज बात करेंगे ना हिंदी ना इंग्लिश यस सो एवरी कैन अंडरस्टैंड तो जैसे कि बताए कैंगन वाटर इज द एक्सपीरियंस तो सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि व्हाट इज द बेसिक इंपोर्टेंस ऑफ द वाटर क्योंकि जनरली हम तो खाना खाते हैं वी आर टेकिंग द फूड तो व्हाई वी फोकस ऑन वाटर Okay. प्लीज Right. Dr. Moore, although we are almost into half of this session, I would like to pay some silence to all the colleagues and friends that have been lost due to the current pandemic due to COVID-19. So if you don't mind, I'm going to do a prayer in Sanskrit, and if everybody can join or keep their mics mute. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. From completeness to complete. The importance of water is not describable. I don't think anybody on this world can survive without water. Our body itself is made up of more than 70% of water. And as a neurologist, I can say it's more than 80% in the brain. We do see a lot of patients arriving in the hospital because they have not drunk enough water. Now, when I came to the UK, I was surprised by the different types of coffee. We think, okay, coffee is coffee. But then they asked me, skinny latte with sugar, without sugar, with milk, without milk, what kind of milk? So when my children, Love and Kush, presented me with Kangen water, that was the first time I was introduced to this machine and different types of water with different pHs from 2.5 to 11.5. And that's when I started doing my own little research into how can drinking water make a difference to your health. I would also like to say that when you are born, you're born with your body, and it is your prime duty to look after the body which has been given to you. And if it is more than 70% containing water, it is very important that you drink a very good quality of water. So I'm very grateful to my children who bought me this machine, after which I have been able to look more into detail about what kind of water we are getting from this source. The Kangen water was very easy with their guidance to plug it up into my filtered tap. And I started with 8.5 pH. Love has given a bit of introduction about the machine, so people are aware that you get different types of pH water. But just for those who may not be aware, this is electrolyzed reduced water. Now, the importance of electrolyzed reduced water is that it also removes the chlorine, which is used to purify water, which is more harmful to our body. It also removes the toxins. So I use the 11.5 water to wash all the vegetables, and I'm shocked to see the amount of residue that is coming out in the water. And that is probably what, till now, we have been consuming in our bodies. And
although I don't have clinical studies to say how bad it can be for your body, from the epidemic and endemic and the general health of the world, we are aware of how many illnesses are increasing in the world. Metabolic syndrome, which consists of obesity, diabetes, high blood pressure, these are the common diseases which are very commonly seen globally, not just in India or abroad. So it has a lot to do with the lifestyle as well. I mean, everybody is aware that you should be drinking more water. Zyada pani peene se aapko sphurti bhi rehti hai. But I think with Kangen, I've realized that you do feel more energetic as well. And you can drink more water, which has been recommended about 2 to 3 liters, without feeling the fullness which you would normally get with other waters. And on reviewing the literature which is available for Kangen or electrolyzed reduced water, I'm very impressed that the water that we drink, the Kangen water, goes to the cellular level. So हमारे शरीर में जहाँ जहाँ cells होते हैं, उस तक ये पानी पहुँचता है. So the cells also become, I mean, anything you put water in, say there is a balloon, and in the balloon there is no water, so it will be flat. As soon as you put water in it, it will blow up. Similarly, at the cellular level, if the cells are dehydrated, they will be flat and they will be not functioning at their optimal level. So as soon as this water you drink, it obviously maximizes the performance at a cellular level. Now, just looking at the clinical studies, I've not been able to find any proper documentation, and I would be very keen. I am a user, Kangen water user, only for a month, but there are lots of ideas which are coming across in my mind. And this talk today has been mainly to make people aware that there is something which is known as Kangen water. It is having its own health benefits. And I think it is very important people do their own research and try and make up their minds that whether this is the water which is going to be useful for them or not. Till date, I have not found any side effects from it, except if some people would say that it detoxified me. So maybe around 10 to 15 days of use, you may have increased frequency of your stools, which will be lighter, and you will feel detoxified. That's how I felt. And I think that is something which is personal, and everybody is different, and everybody's experience and journey is different. I have continued using the 8.5 pH and not gone to 9.5 because I'm going to do it at a monthly basis. Yes. So, I mean, I could go on and on about water. I mean, water is elixir of life, isn't it? Amrut hai, amrut. Pani ke bina nahi ji sakte. Yes, definitely the water is the life. But I want to ask you, so what makes Kangen water unique from other water? There are so many water available in this world. We are drinking it. Right. So why we going with Kangen water? Yeah. So what I found with Kangen water is as Love explained initially, that it has got microclustering and antioxidant effect. The antioxidant effect is very important. At the moment, everybody is under a lot of stress, not only physical, but mental. And this Kangen water is supposedly supposed to help at a cellular level. And that's why I would say Kangen water. So if you take two things, one which has got a lot of impurities will be definitely thicker. And I think Kangen water is lighter. And that's why the absorption is at the cellular level. So the doctor that you mentioned from Japan did a endoscopic study. And I think he mentioned that the water is absorbed from the lower part of esophagus and into the stomach. So by the time it goes into the intestine, it has already been absorbed and reached all the cells. So I think that is pretty impressive. Yes. And I want to also know about which are the benefits we can get by the Kangen water, which type of changes in the body, how it will be help to us. Well, the studies I have come across have been shown to be beneficial to prevent diabetes. I would not say that the person who is already diabetic
should stop the medication. No. But if there is a family history of diabetes and you make lifestyle modifications, along with that you introduce Kangen water, probably you may be able to prevent diabetes and probably other illnesses like high blood pressure as well. It has also been said to help. Maybe by drinking Kangen water, you are more health conscious. And I think I have to congratulate each and everyone who is joining us today, because they are here because they are conscious of their health, because this is something positive towards a better health. And that is where people have found time to be here and listen to me. So I would definitely congratulate each and everyone who is listening to us today. So lifestyle modification is very important. Just drinking Kangen water will not make your life better. But I think being aware of what you're introducing in your body will definitely make you more mindful and will help you think, am I eating or drinking the right thing? Yes, thank you. And I also want to know what is your personal experience with Kangen water? Do you have any benefit from last 1 month or for your patient? No, I have not introduced this to my patients. I'm sorry, this is only for my personal use and my family, and I'm very happy with it. On the first week of its use, my children, Love and Kush, told me, Mommy, try 2.5. It is a very good bactericidal water. So, and then I looked up on YouTube. I found quite a lot of videos. There's a dentist who's using it in the mouth as well. So, and I had a hematoma on my foot. Something must have dropped on my foot and it was all black and red. And I was quite disgusted with it. So I sprayed the 2.5 water on it. And to my amazement, the next day it had become completely light. For me, if I get hurt, usually it takes about a week for the lesion to heal. And this was for me really the experience of what we call a miracle water. So I'm yet, I would say, an infant, a baby in the use of Kangen water, but till date, I have been very impressed. And I think there are lots of applications which need to be tried and tested so that people may have more confidence. But as you mentioned, I think it is an experience. So unless the person experiences it themselves, drinks it themselves and does their own research, it will be very difficult to say either way. Yes. One more question. So many people say that Kangen water is replaced the medicine, or this is the medicine for the any curing disease. So what will you say? I would not say that it is a medicine, but it is definitely something which will prevent you from needing to take the medicine, if you understand what I say. So dawai nahi khani hai future mein, to Kangen water piyo. That is what I would think. And not only Kangen water, I think just generally leading a healthy lifestyle, trying to reduce weight, trying to do exercise. It's like doing yogasans. I mean, everybody knows that yogasans are good for your body. It's not same as exercise. Meditation is good for your mind. And people are trying to bring that into their lifestyle. Similarly, as more than 70% of our body is water, if we introduce healthy, pure water into our body, I'm sure it is going to have a positive effect. Yes, thank you. And please give us some suggestions for all your guests and all your distributor. So what is your suggestion for us? I am very keen to do a questionnaire to all the Kangen users. So I will design a questionnaire which can be passed on to all the Kangen users, which will be very brief. It will just take 2 minutes of your time. And collecting that data, we will be able to see that everybody's experiences may be different. Some may be positive, some may be negative, we don't know. But we can build on that and try and improve or try and learn from each other's experiences. Yes. Thank you very much for giving your precious time. Yeah, I hope I have created an awareness, because that's the main aim of this talk today.
So it is awareness to be healthy and to maintain a healthy lifestyle, for which water is, I think, a majority percentage in your life. Yes. Thank you. Thank you. Yes. Namaste. Okay. So I give you all the in the just in 2 सेकेंड मीन्स जो भी यहाँ पे बातचीत हुई, काफी सारे हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं, उनको शायद पता नहीं चला होगा या फिर चला भी होगा, क्योंकि जरूरत नहीं कि हर जगह पे लैंग्वेज हो, क्योंकि कभी कभी दिल से भाव से भी हम बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपने एक बात सुनी कि कैंगन वाटर इज द नॉट द मेडिसिन, दिस इज द थिंग, इफ यू डोंट वांट टू टेक मेडिसिन देन यू रिक्वायर द कैंगन वाटर। अगर आप जिंदगी में दवाई लेने से बचना चाहते हैं तो आपको कैंगन वाटर लेना है। दिस इज द प्योरली वाटर, दिस इज द बेस्ड ऑन अवर लाइफस्टाइल। जैसे कि आज हमने अपनी गाड़ी बदली, हमारा पंखा बदला, एसी बदली, फोन बदला, सब कुछ बदला, लेकिन पानी नहीं बदला। दिस टाइम टू चेंज योर वाटर, and if you change your water you will definitely change your life. So there are the so many other doctors also available with us, and we are also going to get the experience of themselves. Yes, is Dr. Milap is available here? Yes, Dr. Milap. Hello. Yeah, am I audible? Yes, Dr. Milap, you are audible. Yeah, welcome. How are you? Yes, I give the brief introduction of the Dr. Milap. Dr. Milap is the dermatologist and is practicing in Ahmedabad. He will sharing his experience with the Kangen water, what he achieved from the Kangen water. Yes, please, Dr. Milap, please share. Yeah, I will share in Hindi. Hello friends, मेरे पास कैंगन वाटर दिसंबर 2019 से है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने 1.5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। एज अ डे टू डे लाइफ, व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस आई गॉट चेंजेस इन माय, मेरे को मेरे फैमिली में क्या क्या चेंजेस मिले, पहले मैं वो शेयर करूँगा। तो आई हैव अ chronic problem of constipation and acidity, and it was 15 साल से था, तो that got cleared। तो 1.5 साल से मेरा ये प्रॉब्लम 100% क्लियर हो गया है। That personally I got। second thing, in my family, my mother was having a back pain problem, and she started yoga for that। योगा चालू किया, उससे थोड़ा उसको फर्क पड़ा। अगर जब से कैंगन वाटर चालू किया है, फिर ये लॉकडाउन में तो योगा भी नहीं जा सकते, फिर भी उसको बैक पेन चला गया है। तो डेट टू मेजर बेनिफिट मैंने मेरे फैमिली में देखा। दूसरा, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मैंने मेरे क्लिनिक पे भी ये मशीन है, एंड मैं फ्रिक्वेंटली पेशेंट में यूज करता हूँ। मैंने खासकर इसको यूज किया है सोरियासिस के पेशेंट में, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे। एंड ओरल अल्सर्स, मुंह में चांदे होते हैं, तो उसमें मैं 2.5 का गार्गल्स करने को बोलता हूँ। अनदर एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा कि टॉन्सिलाइटिस के गला खराब होना, तो वो मेरी फैमिली में मेरे को या मेरी डॉटर्स, मेरी 2 छोटी डॉटर्स है 7 years and 4 years, तो गला खराब होने में 2.5 का जब भी गार्गल्स हम कराते हैं, तो ये कोविड सिचुएशन में ऐसे तो डर रहता है क्योंकि हम रेगुलर पेशेंट को देखते रहते हैं, मगर ये एज अ मिरेकल मेरे लिए है कि कभी भी गला खराब हो तो 2 दिन में 2.5 का गार्गल मेरे को, तो मैं या बच्चों को तो वो करते हैं, तो तीसरे दिन टॉन्सिलाइटिस या गला में जो भी इश्यू हो, चांदी भी हो, वो क्लियर हो जाती है। तो दैट इज अ मिरेकल, वरना मिनिममली एज अ डॉक्टर मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को हफ्ते या 10 दिन का गोली या ट्यूब लगाना पड़ता था। अनदर थिंग कि मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस का मतलब छोटे बच्चों को एलर्जी होती है। तो आपका बहुत सारे पेरेंट्स हो यहाँ पे, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि छोटे बच्चे होते हैं तो मच्छर काटने या किसी को टेंडेंसी होती है कि बहुत खुजली आती है, बराबर। तो इसका वन ऑफ द कॉज होता है कि बॉडी का हाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी होना। बच्चे लिमिटेड अमाउंट में पानी पीते हैं क्योंकि वो खेलते रहते हैं, उसका ध्यान वहाँ पे ज्यादा होता है।
तो ये मैंने नोटिस किया कि जो अगर हम कैंगन वाटर देते हैं और आप ये पानी पीते हैं तो बॉडी का हाइड्रेशन इतना बढ़ जाता है कि आपको ये एलर्जी होने का चांसेस बहुत घट जाता है। एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि जो मेरी 4 साल की बच्ची है उसको जब 2-2.5 साल की थी तब एटोपिक जैसा था, उसको एलर्जी बार बार होती थी, और अभी 1.5 साल से वो कोई इश्यू नहीं हुआ उसको। So this is also my personal experience. So these are all the benefits, and there are number of more. But as time is compressing, I am handing over to Virat. Okay, thank you. Okay. Thank you, Dr. Mila, for giving your experience. Hello. Thank you, Virat. Okay. We have one more doctor available, and he is the Dr. Gaurav Chabra from the Udaipur. Hello. Anyone is? Okay. Yes, Dr. Gaurav, can you hear me? Dr. Gaurav Chabra, please unmute them. Yeah, thank you, Dr. Viral. Yeah, good evening, everyone. I am Dr. Gaurav Chabra. I am pulmonologist working in Gitanjali Medical College and Hospital as a professor, and I am in charge of COVID caring unit. And from last 1.5 year, we are around 15 months. We are dealing with lots of COVID patients. सबसे पहले, first of all, I will share my own experience about the Kangen. I experienced, as already I think Dr. Viral, you said, okay, this is the experience. Yes. Really, it's experience. And my experience is I have a very profound shift in my well-beingness. मेरा एनर्जी लेवल जो है वो उसके अंदर शिफ्ट आया है। इनिशियली मैं काम करके बहुत थक जाता था, जैसे हॉस्पिटल में गए, स्ट्रेस तो रहता ही है सारा। देन घर पे आने के बाद मेरे को एक नैप चाहिए 1 घंटे का, और अभी मैं पिछले काफी समय से आई एम नॉट स्लीपिंग। डे टाइम में मैंने सोना छोड़ दिया है, और इवन नाइट में भी मेनी एट टाइम्स जो है 12-1 बज जाता है। और उतना थकान जो मैं पहले बहुत ऐसा लगता था शरीर को घसीट रहे हैं, उससे जबरदस्ती काम ले रहे हैं, वैसा आई एम नॉट हैविंग दैट। तो अभी राइट नाउ आई कैन वर्क इवन 2 days 3 days कंटिन्यूअसली, जो पहले में काम नहीं। तो डेफिनेटली इन माय एक्सपीरियंस आई एम हैविंग वेरी प्रोफाउंड शिफ्ट इन माय वेलबींगनेस। और इवन नाउ पहले मेरे घुटने काफी दर्द करते थे, और मैं सीढ़ियां चढ़ना अवॉइड करता था। दिखने में तो बढ़िया है, मैं बहुत ज्यादा फैटी नहीं हूँ और ऐसा है, बट उसके बाद भी आई अवॉइड। और बैडमिंटन खेलना मुझे पसंद है, आई डोंट प्ले, बिकॉज मेरे को लगता था यार मैं बहुत ज्यादा अगर थोड़ा सा भी हो गया तो अपना काम बंद हो जाएगा, तो ऐसा था। तो आफ्टर दैट आई एम यूजिंग कैंगन सिंस 9 months, अब 9 महीने हो गए मेरे को। और अभी पिछले 4-5 महीने से मैं दबा के बैडमिंटन खेल रहा हूँ। और मेरा फ्लैट है 5th फ्लोर पे है, मेरा चैम्बर इन माय हॉस्पिटल, माय वार्ड इज इन 5th फ्लोर। मैं सीढ़ियां चढ़ता हूँ, और कोविड के टाइम से वैसे भी मैं लिफ्ट यूज नहीं करता हूँ, तो अभी तो वैसे भी मेरा को इंटरेस्ट आ गया है कि अब मैं सीढ़ियां ही चढ़ूं अपनी फिटनेस के लिए। तो दैट आई फील कि नाउ आई कैन डू दैट। और आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, और लास्ट 9 महीने से मैं अपना HbA1c देख रहा हूँ। HbA1c 3 month का आपको डायबिटीज का आइडिया बताता है कि आप कहाँ पर चल रहे हैं, राइट। और मेरा अभी 3 मंथ से मैं देख रहा हूँ, लास्ट 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, जो पहला मेरा 7.2 तक चला गया था HbA1c, अभी लास्ट 2 टाइम से 5.2 और 5.6 चल रहा है। दैट इज विद इन नॉर्मल लिमिट, और दैट इज मेरे लिए भी एक वो दैट इज रियली वेरी गुड थिंग मेरे लिए। तो आई एम रियली फैन ऑफ नाउ, I cannot express, this is just you experience, right? एंड वन मोर थिंग मैं बोलूंगा कि मेरे पेरेंट्स भी डायबिटिक हैं। मेरे फादर का शुगर पहले कंट्रोल नहीं था, नाउ ही इज टेकिंग ओनली 1 tablet। आई एम ऑल्सो टेकिंग 1 tablet। जैसा कि बताया कि इट्स नॉट फॉर रिप्लेसिंग द मेडिसिन, बट डेफिनेटली योर मेडिसिन विल बिकम वेरी लेस।
और वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और इवन उसके एसिडिटी वगैरह का तो 3-4 दिन में मैं यूजुअली वी डॉक्टर्स आर यूजुअली मेनी टाइम्स हम स्ट्रेस में रहते ही रहते हैं। आप Yes. कितना भी अवॉइड करें, पेशेंट का स्ट्रेस, कुछ ना कुछ स्ट्रेस माइंड में रहता है। तो उसकी वजह से क्या थकान और ये सब रहता है, शुगर हाई हो जाना, ये सब रहता था। तो अब अभी ऐसा कुछ है नहीं, उसमें काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो मेडिसिन भी कम हो गया है, एसिडिटी वैसे ही काफी हद तक ठीक हो गया। अभी मैंने काफी लंबे समय से एंटासिड्स वगैरह नहीं लिए हैं। अभी मुझे ये भी पता नहीं है कि मैंने एंटासिड कहाँ रखे हुए। पहले मेरी बगल, मेरे पलंग के साइड में टेबल में एंटासिड जरूर होता था। रात में 2 बजे 3 बजे नींद में हाथ मारता था और ले लेता था। दैट वाज माय प्रैक्टिस, है ना। तो अभी ऐसा नहीं है, तो दैट्स ग्रेट थिंग। और यही मेरे फ्रेंड्स का भी एक्सपीरियंस है, जस्ट एक्सपीरियंस। Yes. I am inviting everyone to experience. Yeah. Yes, और डॉक्टर गौरव, मैं आपको सबसे पहले हम सबकी ओर से शुक्रिया भी करना चाहूंगा, क्योंकि इस कोविड के दौर में जो आपने हेल्थ वॉरियर की भूमिका भजवी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट। एंड आई ऑल्सो वांट टू नो दैट, तो व्हाट इज द एक्सपीरियंस अबाउट द कोविड? क्या आपको कोविड में कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस हुआ? Yes. और आपका तो भी फेवरेट सब्जेक्ट है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो उसके रिलेटेड हमें कुछ बताइए। एक्चुअली मैं इस पे काम कर रहा हूँ अभी। ये आरसीटी तो नहीं है, दिस इज माय जस्ट ऑब्जर्वेशंस। पहले तो मैं अपने से ही बात करता हूँ। आई एम रेगुलरली कमिंग अक्रॉस विद कोविड पॉजिटिव पेशेंट रेगुलरली, राइट। और लेकिन अभी तक बिकॉज मैं इस ग्रेस ऑफ द गॉड, है ना, मेरे को आई एम सेव्ड स्टिल ऊपर वाले की दया से। और मैं कैंगन को भी श्रेय देता हूँ इसका कि समवेयर मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय बिलीफ, कि मुझे लगता है कि यार मैं शायद इसकी वजह से भी बचा हुआ हूँ। तो ये भी एक मेरे को एक एस्पेक्ट है। और दूसरा, मैंने कुछ मेरे पेशेंट्स जो कोविड पेशेंट्स जो मेरे रिलेशनशिप में फ्रेंड्स, और इसमें मेरे यहाँ पर एक मित्र हैं, उनके साथ मिल करके मैंने उन लोगों को वो पानी पहुंचाया है जो सीवियर थे और जो मॉडरेट केसेस थे। दे रिकवर्ड, बट I cannot comment, I cannot say कि वो कैंगन की वजह से ही रिकवर हुए, but they recovered. That is my observation. है ना। अच्छा, और दूसरा एक जो आपने बात किया पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए, we are having big challenge of this disease. होता क्या है इसमें कि कोविड के बाद में फेफड़ा सिकुड़ जाता है और उससे ऑक्सीजन क्रॉस नहीं होती और लोग ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मैंने उन पेशेंट्स में मेरे पास अभी 30 पेशेंट चल रहे हैं और 30 पेशेंट्स में आई एम यूजिंग, उनमें से मैंने आधे पेशेंट्स को दिया है, आधे पेशेंट्स को भी नहीं दिया है। जो मेरे अप्रोच में है उनको दिया है, लेकिन मैंने ये 2 ग्रुप बना लिए हैं कि भाई मैं इनको दिया है तो मैं देखूं कैसे रहता है। तो इन माय ऑब्जर्वेशन, आई एम नॉट, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट डन द आरसीटीज, बिकॉज वी डॉक्टर्स बिलीव ऑन ओनली आरसीटीज, क्योंकि डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होना चाहिए, तब जाकर के हम कह सकते हैं। बट दैट इज माय ऑब्जर्वेशन कि ये उसमें काम करता है, क्योंकि बैकग्राउंड जो मेरा कॉन्सेप्ट है, हम लोग एक पैंथर ट्रायल है, उसके अंदर ये देखा गया है कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन। सबको पता है म्यूसिनैक या ल्यूबिनैक और इस तरह की ड्रग्स आती हैं 600 मिलीग्राम की। आपके भी आपने अपने, क्योंकि अभी एवरीबडी इज एक्सपीरियंस्ड अबाउट कोविड एंड पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो डॉक्टर ने कहीं ना कहीं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको पानी के अंदर घोल के लेने वाली 600 मिलीग्राम की गोलियां दी ही होंगी। वो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है, एन एसिटाइल सिस्टीन। तो मैंने उन पेशेंट्स में कुछ में एन एसिटाइल सिस्टीन कंटिन्यू किया है और कुछ पेशेंट्स में मैंने कैंगन पानी दिया है। तो मैंने ये थोड़ा ऑब्जर्व किया है कि उनके अंदर थोड़ा रिकवरी फास्ट है, उनका ऑक्सीजन डिपेंडेंसी थोड़ा फास्ट कम हुआ है। डेफिनेटली उन दूसरे पेशेंट्स में भी कम हुआ है, लेकिन एज कंपेयर टू मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें थोड़ा फास्ट है, क्योंकि हम कैंगन वाटर की भी वन ऑफ द प्रॉपर्टीज एंटीऑक्सीडेंट और एल्कलाइन प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हेल्दी सेल्स जो होती है वो एल्कलाइन होती है। तो डेफिनेटली इसका रोल है, बट इट इज वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, बिकॉज अभी मेरे को बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं हुआ इसको उन पेशेंट में यूज करने का। बट मेरे ओपिनियन में it is working. Yeah. Thank you, Dr. Gaurav, for your nice experience with the Kangen water and also with the COVID patient. Yes, thank you. Thank you. I want to thank you.
I want to invite one more doctor, Dr. Hardik Khamar from the Ahmedabad. Dr. Hardik, can you hear me? Yes, I can hear you. Good evening, everyone. I am Dr. Hardik Khamar, and professionally, I am a homeopathic doctor. I am practicing in Ahmedabad. Since last 7-8 years, हूँ कैंसर पर बहुत काम करूँ जो होम्योपैथी थी. So what I've observed कितना बड़ा पेशेंट से कि Excuse me, Hardik ji. Can you please share in Hindi at least? हाँ, मैं कैंसर पेशेंट्स को बहुत ट्रीट करता हूँ. तो जब से मैंने कैंगन मेरे घर पर शुरू करा 1.5 साल से, तो मैंने एक ट्रायल करा. पेशेंट का जब भी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी होता है तो उसके अगले दिन और 2-3 दिन के बाद मैं कंटिन्यूअस कैंगन वाटर पिलाता हूँ. सो द प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रो क्लस्टरिंग एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइजेशन से उनके टॉक्सिन्स जल्दी रिमूव हो जाते हैं. और जो कीमो और रेडियो के बाद में जो वीकनेस होती है उसमें मैंने ड्रामेटिक रिकवरी देखा है. पेशेंट फास्ट बाउंस बैक हो रहे हैं. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. दूसरा एक्सपीरियंस है, एक पेशेंट्स को 300-400 वाट से स्किन के ऊपर एक टाइप के मसे थे वायरस के, करीबन 1.5 साल से ये उनको थे. तो मैं ये वाट्स मेरी दवाई से ट्रीट करता हूँ, लेकिन कम से कम 6 से 7 महीने इसको ट्रीट करने में लगते हैं. बट मैंने साथ में खाली 2.5 का स्प्रे दे दिया मेरी मेडिसिन के साथ में. तो 1 से 1.5 महीने के अंदर 300 से 400 सारे जो मसे थे वाट्स वो सारे निकल गए और स्किन अभी क्रिस्टल क्लियर है. सो ये मेरे पेशेंट के ऊपर एक्सपीरियंस है. और तीसरा जो मेरे खुद पर जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, 1 साल पहले मुझे एक आरसीटी कराने की जरूरत पड़ी थी. डॉक्टर मिलाप ने भी ये बोला. मुझे टूथ पेन होता था, लेकिन कोरोना की वजह से मैं अवॉइड कर रहा था. तो जब भी पेन होता है मैं 2.5 का गार्गल करता हूँ फॉलोड बाय 11.5 का गार्गल. तो विद इन फ्यू मिनट्स मेरा पेन चला जाता है और फिर 3-4 महीने के लिए पेन समझो स्लीपर सेल जैसा हो जाता है, रिवर्ट होके नहीं आता है. सो दिस आर सम पर्सनल बेनिफिट्स व्हिच आई हैव सीन. सो जो माइक्रो क्लस्टरिंग का जो प्रॉपर्टीज है, इमीडिएटली पानी के एब्जॉर्प्शन, वो मुझे लगता है कि वो मिरेकल कर रहा है पेशेंट्स के अंदर. दूसरा चीज मैं अभी देख रहा हूँ थायराइड पेशेंट्स के अंदर B12 का डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है. तो आई एम जस्ट ट्राइंग दैट फॉर डिफरेंट पेशेंट्स कि थायराइड में कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं. वन ऑफ द कल्प्रिट इज क्लोरीन एज अ कैटलिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ थायराइड, क्योंकि ये पानी कैंगन वाटर पूरा पानी को डिक्लोरिनेट कर देता है. तो मुझे लगता है कि इसमें थायराइड में बड़ा रोल एक्सप्लोर हम कर सकते हैं. थैंक यू. Thank you, Dr. Hardik Khamar, and your sharing was the extraordinary. One of the main thing, यहाँ पे एक चीज बहुत ही मुझे बढ़िया लगी, कीमोथेरापी में ये यूज करते हैं and he gets the result from the stop the side effect of the chemotherapy. And मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि वर्ल्ड के जो भी अगर कैंसर के बारे में बात की जाए तो हम किसकी बात सुनेंगे? वो आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट में उसकी लाइव वेबसाइट यहाँ पे मेरे पीसी पे अभी ओपन है, तो आप देख सकते हैं. दिस इज द, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप शांति से इसको देख भी सकते हैं. दिस इज द अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, मतलब वॉशिंगटन में है, यूएसए में. तो यहाँ पे एक रिकमेंड लिस्ट इन्होंने डिस्क्राइब किया है. क्या है कि अगर कैंसर से बचना है या उसकी ट्रीटमेंट करनी है तो क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है बॉडी के लिए, कहाँ से आप शुरू कर सकते हो. यहाँ पे तो फर्स्ट वन इज द अल्कनाइज आयोनाइज्ड वाटर, और उसमें भी आप अगर डीप में जाओगे तो आपको बहुत सारी इसकी इंफॉर्मेशन इसकी मिलेगी यहाँ के फोटो के साथ, इसके ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल्स, वॉट एवर यू नो अबाउट द दिस वाटर. सो सोचिए कि ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट भी, जो इसको कंपनी के साथ, मशीन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी इसको एज अ रिकमेंड करता है कि मतलब हेल्थ के लिए बेस्ट क्या है. तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टरों ने एक्सपीरियंस शेयर किया, और मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की तो भरमार हो गई है, तो मैं सबके आंसर तो यहाँ पे नहीं दे सकूंगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कुछ क्वेश्चंस. यहाँ पे ये स्क्रीन आ रही है, टेक्निकल टीम, कैन यू रिमूव दिस? हेलो. यस डॉक्टर. यस, या ओके, थैंक यू. सो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है. मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किए हैं, अभी बीच में मैं थोड़ी रीड कर रहा था, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहूंगा. विल दिस वाटर हेल्प थिन डाउन अवर ब्लड, कि ये क्या ये पानी ब्लड को पतला करता है? मैं सिंपल बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, शायद उसमें आपका सवाल का जवाब हो सकता है, तो आप उसको गौर से सुनिए. जब हम बच्चे होते या फिर कोई भी बच्चा होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है, सिंपली, मतलब क्यों होता है?
क्योंकि हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तब भी 2 सेल में से बनते हैं हम, पता है ना, 2 सेल में से इतने सारे सेल बनते ताकि बॉडी ग्रो होता है। तो ग्रो क्यों होते हैं? ताकि सेल बनते हो। सेल बनने के लिए क्या चाहिए? सेल बनने के लिए चाहिए सेल बनने जैसा एनवायरनमेंट, मतलब उसको हाइड्रेशन चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए और उसको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। या फिर ऐसा बोले कि भाई एक बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए जो भी चाहिए वो होना चाहिए। तो एटलीस्ट 20 या 25 साल तक किसी का भी ग्रोथ होता है, क्योंकि ये चीजें मिलती रहती है। जैसे ये चीजें मिलना बंद होगी, समझो न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया, एंटीऑक्सीडेंट मिलना बंद हो गया, तो क्या होगा? सेल जो भी नए बनने होने चाहिए उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। अगर स्लो होता है तो डिसीज को आने की शुरुआत होगी। अगर कोई सेल, किसी भी ऑर्गन के सेल डैमेज हो गए तो आपको उस ऑर्गन की पर्टिकुलर बीमारी हो सकती है। जैसे कि पेनक्रियाज के सेल डैमेज हुए तो हम उसको डायबिटीज कहते हैं, किडनी के सेल डैमेज हुए तो उसको किडनी डिसीज कहते हैं, ब्रेन के सेल डैमेज हुए या कोई वहां पे नए सेल प्रोड्यूस हुए, अगर मैलिग्नेंसी है तो वो भी क्या, एक सेल का जो डैमेज होना चाहिए वो ठीक से नहीं हुआ, तो उसके कारण जो भी बना उसको मैलिग्नेंसी कहते हैं। तो वो भी कैसे ही होता है? सेल की वजह से ही। तो इस सेल पे पानी काम करता है। तो आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मैं नहीं दे सकूंगा। बहुत सारे डिसीज के नाम भी मेरे पास आए कि ये सारे डिसीज पे पानी काम करता है। तो मैं आपको क्लियर कल बताना चाहता हूँ कि दिस वाटर इज नॉट वर्किंग ऑन एनी डिसीज। ये पानी कोई भी रोग, कोई भी डिसीज पे काम नहीं करता। इट्स वर्क ओनली ऑन योर बॉडी, ओनली ऑन योर सेल। उसको पता नहीं कि ये इसको पीने वाले को डायबिटीज है, थायराइड है, कैंसर है, वाटर डजंट नो एनीथिंग। उसको कुछ पता नहीं। उसको अंदर जाना है, आपकी बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना है जितना भी हो सकेगा। वो भी जरूरी नहीं है एक को अगर 3 महीने में कुछ फायदा हो तो दूसरे को भी 3 महीने में उतना ही मिले, मे बी डिफरेंट। उसको 1 साल में भी वो फायदा मिल सकता है, क्योंकि इट्स बॉडी रिएक्ट्स विद द वाटर। आपका बॉडी जैसे काम करेगा वैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल के जवाब आ गए होंगे। और इज रेगुलर अल्कलाइन आयोनाइज वाटर ड्रिंकिंग एडवाइजेबल? हाँ, यस, आप इस पानी को रेगुलर भी पी सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी आयन फॉर्म में होता है, मतलब -OH माइनस फॉर्म में। तो आप जितना बॉडी को पानी चाहिए उतना बॉडी इसको रखेगा, बाकी का पानी है वो वेस्ट में निकल जाएगा और इससे अल्कलोसिस भी नहीं होता। आफ्टर researching after the 2 years, I don't get any case of the alkalosis with this water. Even use the Kangen water since last 2 or 3 years. 2-3 साल से भी कोई यूज कर रहा है फिर भी उसको कोई साइड इफेक्ट जैसा देखने को नहीं मिला है। Yes. Any questions? Else, so many questions available. One more question is, it is very easy to the motor alkaline manually. Yes, perfect question. कि अल्कलाइन पानी को घर पे बनाना बहुत आसान है। आप अपने टैप वाटर में सिर्फ आपके जो खाने का सोडा आता है वो भी अगर उसमें डाल देते हैं तो भी आपका पानी अल्कलाइन हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी बात हुई, सोचिए आपने एक शरबत बनाया घर पे, उसमें चीनी ज्यादा पड़ गई, बराबर, शुगर। तो अब आप उसमें थोड़ा नमक डाल रहे हो कि चीनी का स्वाद बराबर करते हैं, तो नमक बढ़ गया तो फिर आप उसमें चीनी डालोगे। तो ऐसे करके करके मतलब अल्टीमेटली जो शरबत में जो होने चाहिए वो सब इम्बैलेंस हो गया। तो वैसे ही आप अल्कलाइन पानी को घर पे तो बना सकते हो, लेकिन इट इज नॉट रिकमेंड फॉर द हेल्थ, क्योंकि हमने कुछ उसमें ऐड करके उसको अल्कलिनिटी बनाई है पानी की, उसको अल्कलाइज नहीं बनाए। लेकिन जो कैंगन वाटर है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस वाटर, उसमें पानी 2 भाग में बढ़ जाता है। जो पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो हमें अलग करके हमें मिल जाते हैं, जिसको हम बॉडी के लिए एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो दिस इज द आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर एंड ऑल अदर इज alkaline water. It is dangerous for the health, alkaline water. Yes, one more question is, sir, high blood pressure and diabetes, it's my answer is same for the all the disease question. This water is not particularly disease, it is for the body, so you can drink in any condition. Sir ji, मेरे को कोई स्टोन का बहुत स्टोन आ गया, if we will make water alkaline भी आ गया। Yes, Kangen water manual, please don't. Medicine, yes, I am consuming medicine Oxetol 450 since 17 years. If I drink Kangen water, it will benefit me or not? Yes, sir, this is the one common answer is that you have to experience.
क्योंकि ऐसी चीज दुनिया में और कोई नहीं बनी है स्पेशली फॉर डॉक्टर्स कि हम किसी को दे उससे पहले हम उसको एक्सपीरियंस कर सके। हम ट्रायल क्यों मांगते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल क्यों मांगते हैं भाई इसका रिसर्च क्या है ये क्या है, क्योंकि अगर कोई दवाई बनी है तो उसे हम थोड़ी पियेंगे, डॉक्टर्स तो पी के देता नहीं, लेकिन कैंगन वाटर कैन बी एक्सपीरियंस, हम उसको यूज कर सकते हैं, यूज करने के बाद किसी को देना है तो दे सकते हैं। आप भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आपको भी चांसेस है कि दूसरों लोगों को भी जो रिजल्ट मिला है वो आपको मिल सकता है। यस, does it dilute stomach acid? Yes, good question from the Hardik Bhatt. No, this ये पानी है जो हमारा बॉडी में HCl होता है, मतलब जो पाचन के लिए हमारी बॉडी में जो HCl प्रोड्यूस होता है, बराबर, वो ये उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। बेसिकली HCl आता क्यों है? क्योंकि हमारी जो फूड पैटर्न है, जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होते हैं उसमें फूड को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही ये पानी अंदर जाता है वैसे ही आपकी जो HCl है वो यूज होगा, उसको बोलते हैं कि उसकी जो इफेक्ट है वो खत्म नहीं होगी। समझो HCl आता क्योंकि हमारा फूड पैटर्न अल्कनी होना चाहिए। भगवान ने हमें जो भी खाना दिया है वो मोस्टली अल्कलाइन है। आप नेचुरल फूड चेक करके देखो, नेचुरल फूड अब मैक्सिमम अल्किनिटी वाले होते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एसिड होता है तो वो एसिड भी इससे न्यूट्रलाइज नहीं होगा बल्कि यूज हो जाएगा। यस, देन बॉडी में एसिडिक हो जरूरी છે अल्कलाइन वाटर आपसे तो बॉडी अल्कलाइन થઈ જશે फ्रॉम द कश्यप पटेल। नो, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली डूइंग द वाटर डिवाइड, मतलब पानी को दो हिस्से में बांट रहे हैं। पानी में जो एसिडिक भाग था, क्योंकि पानी में अगर समझो कचरा है तो हम बॉडी में क्यों डाले उसको, ऐसी बात है। पानी में जो एसिडिक भाग है जो हमारी बॉडी के लिए काम का नहीं है, क्योंकि उसके मिनरल्स और पानी के बॉन्ड्स होते हैं, तो ये बॉन्ड को तोड़ के हमें जो मिनरल्स फॉर्म में पानी मिलता है तो हम सीधा मिनरल्स ले रहे हैं। आप समझो अगर कोई विटामिन की टेबलेट खा रहे हो तो आपको उसमें कोई डैमेज होगा? नहीं होगा। तो वैसे ही ये पानी से आपको कुछ एसिडिक बैलेंस है बॉडी का, वो कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो डोंट बी वरी। Yes, when we are drinking Kangen water every day and when we go out station, yes, good question। कि भी जनरली हम अगर घर पे हो तो पानी पी सकते हैं, बाहर जाएंगे तो कौन सा पानी पिएंगे? तो आपको बता दूं कि अवर बॉडी इज हैबिचुअल, मतलब हमारा बॉडी है वो एक हैबिट पे काम करता है, कोई एक हैबिट एक दिन में नहीं पड़ सकती। तो कैंगन वाटर भी आप अगर पियोगे तो आपकी बॉडी में ग्रेजुअली चेंजेस आएंगे, मतलब कम से कम आप 6 महीने जब पानी पीते हो तो आपके बॉडी का पूरा पानी चेंज होगा। तो उसके बाद अगर आपने 10 दिन 12 दिन 15 दिन अगर आप बाहर चले गए तो भी कोई इफेक्ट नहीं आया, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ अगर समझो आपने कैंगन वाटर पीना छोड़ दिया किसी भी कारण से तो आप पहले जैसे हो जाओगे, लेकिन 1 या 2 दिन में नहीं, उसके लिए भी टाइम लगेगा। समझो आपको 6 महीने कैंगन वाटर पिया है, जो टाइम लगा तो वापस ऐसा होने में भी इतना ही टाइम लगेगा। तो अगर आप थोड़े दिन के लिए बाहर जाते हो तो डोंट वरी। यस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 6 pH ब्यूटी वाटर? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा जो बॉडी का स्किन का pH होता है वो जनरली होता है 4 to 6, और हम जो भी मेडिसिन या स्किन के लिए जो भी अप्लाई करते हैं वो अगर हम स्टमक में देते हैं तो आप सोचिए उसकी कितनी गारंटी है कि वो वहां पे स्किन तक जाएगी या फिर उसकी 100% इफेक्ट हमें मिलेगी। तो ये आयोनाइज्ड वाटर है, बहुत ही पतला है, जिसके कारण क्या होता है ये पानी जैसे ही आप स्किन पे उसको स्प्रे करते हो तो ये पानी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, आप खुद ही इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिसके कारण स्किन पे काफी अच्छा इसका ब्यूटी का रिजल्ट मिलता है। एनी साइड इफेक्ट ड्यूरिंग वैक्सीनेशन फॉर कोविड? नो साइड इफेक्ट, you can continue, no problem. My uric acid dropped 4.4 in 1 month after Kangen use and again raised to 6 and start pain. Yes, it may be changes up to 2 months because you just start Kangen water. Yes, this is the natural, so it may be changes. ये पानी में पीने से डायबिटीज इंक्रीज होती है क्या? इस पानी पीने से डायबिटीज इंक्रीज नहीं होती, लेकिन आपके मार्कर में चेंजेस आ सकता है, क्योंकि मैंने बोला ये पानी डायबिटीज पे काम नहीं करेगा, ये आपके बॉडी पे काम करेगा, और बॉडी जैसा रिएक्ट करेगी वैसा चेंजेस थोड़े दिन के लिए में भी आपको देखने को मिल सकता है। Yes, continuously using alkaline water, it makes urine pH alkaline, it's harmful. Yes, very good question.
कि यहाँ पे लिखा है कि भाई अगर यूरिन का पीएच अल्कलाइन हो गया तो यस डेफिनेटली इट्स अल्बुम। अगर यूरिन का पीएच आप किसी भी पेशेंट का, मैंने यही एक्सपेरिमेंट किया है कि जितने लोग पानी पी रहे कैंगन वाटर, जनरली अगर कुछ इसका साइड इफेक्ट हमें आ रहा है तो क्या होगा, हमारा यूरिन पीएच भी बढ़ जाएगा। इट्स अल्कलाइन एंड इट्स वेरी डेंजरस। बट आफ्टर द ड्रिंकिंग कैंगन वाटर किसी का भी आज तक यूरिन का पीएच अल्कलाइन नहीं देखा है। आपके पास कोई ऐसा केसेस हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी। Does it have negative impact if we consume for a long time? No problem, you can take it. When I was researching about alkaline water, I read in 2 articles we should not drink alkaline water. Yes, I already told about that. Alkaline water is dangerous for health, but this is the ionized alkaline water. 11.5 picture water is used to specify number. Sorry, I can't understand. આંખમાં કયું પાણી છાંટી શકાય? Beauty and also 2.5. It is safe for people who are undergoing dialysis. Yes, definitely. You can start with 7 pH and going up to 8.5 pH. But quantity is measured by the indicated. जो डॉक्टर ने बोला है वही क्वांटिटी में पानी देना है, क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है. How to work water in kidney stone? Yes, water is microcluster. It pushes the stone. It maybe comes out or it's maybe not painful. The problem with having very alkaline urine is that you don't have any protects against harmful microbes. How to work water in kidney stone? Yes, I already covered. How Kangen water work on cancer cells or cancer patient? Yes, this is a very big topic, and if you want to know about the complete mechanism, आप वो जो मैंने साइट दिखाई थी एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, उस साइट पे चले जाइए, वहां पे चैप्टर 6 है, एक रिकमेंड किया है, उस चैप्टर 6 को पूरा पढ़िए, बराबर। तो आपको पूरा कंफर्मेशन हो जाएगा कैंसर सेल पे भी ये पानी कैसे काम करता है। विच पीएच वाटर मस्ट बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स, ब्यूटी, एंड ऑल्सो यू कैन यूज 9.5 इन सम प्लांट्स। विच वाटर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? यस, इट शुड बी द 8.5 or 9 pH. And yes, this is the good question, and I also experience when I give the water to the pregnant woman, it's very comfortable. Some nausea and some the morning sickness and all this very reduced the symptom, because this water is full of the alkaline and the minerals. So what is the lack of the minerals? It's complete the fulfill of the requirement. So it's very useful in also the pregnant woman. Which water should drink kidney transplant patient? 7 pH. Pregnant woman, which water give? Dr. Viral Bhai. Yes. Sorry, I interrupted you because it's already 10:08 and our session time is already completed. Sorry, I can't see the time. So I understand because I can see your commitment कि सारे लोगों को health मिले और उनको ये अवेयरनेस क्रिएट हो कि हमारे लिए क्या अच्छा है। लेकिन मैं हमारे सभी दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि कल रात को 9 से 10 बजे हम वापस मिलेंगे। हम सारे डॉक्टर्स हमारे एक्सपर्ट के साथ, हमारी एक्सपर्ट टीम रहेगी उधर, और आप अपने सारे क्वेश्चंस जो है वो वहां पे आके पूछ सकते हैं। हमने चैट बॉक्स में वो लिंक शेयर की है, आप वो लिंक को कॉपी कर लीजिए और कल डेफिनेटली यू कैन जॉइन विथ अस बिटवीन 9 to 10 p.m. Yes, so I really thank you, Dr. Kalyani, Dr. Viral Bhai, Dr. Gaurav, Dr. Hadik, and Dr. Milap, and Mr. Love for creating this wonderful knowledgeable session, and it has given a very clear idea about how water is important for our body and how it works in our body. So thank you so much, and thank you all viewers who are with us in a Zoom meeting and who are watching us on a YouTube live. I really acknowledge all of you and thank you so much. Good night. Yes, please unmute all the participants. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you Thank you so much. team, doctor's team. Thank you, doctor's team. Thank you. Thank you. Thank you, doctor. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Viral and